Now, the third point, Sharia status of combinations of the contract of this AAOIFI Shariah Standard. So this one, it says, it is permissible in Sharia to combine more than one contracts in one set without imposing one contract as a condition in the other. It says that it is not ishtaratul aqd fil aqd is not allowed, but combination of contract is allowed. And provided that the condition is that each contract is permissible on its own, that if you are combining two contracts and each contract is permissible individually, then the combining of those two contracts is allowed. Combining contracts in this manner is acceptable unless it encounters a Sharia restrictions that entails its prohibition on exceptional basis. So this is that if the combination leads toward any Sharia rules violation, then that combination will not be considered valid. कि अगर आपका वो combination of contract किसी भी Sharia rules को violate कर देता है तो फिर वो combination आपके करने की इजाजत नहीं होगी. Okay, the next part is Sharia controls on combination of the contract. So this is the Sharia controls on the combination of the contracts. The clause 1, 4 by 1, it says contracts combining should not include the cases that are explicitly banned by Sharia, like combining sale and lending in one contract, because you know that it says that the first principle of the Sharia control for the combination of contract that not to combine those two contracts whose combinations are prohibited by Sharia in text, like the Holy Prophet, peace be upon him, himself prohibited for combining sale and loan, that in a term that I will sell you my commodity, yeah, I will lend you money on the condition you will buy commodity from me. So this is the sale and loan, because one contract is being made as a condition for the second one. So such is why, because here ishtarat aqd fi aqd, and moreover the Holy Prophet, peace be upon him, explicitly banned it. So that is why your combination of such combining contract is against the text. तो कोई भी आपका combination of contract जो वाज़े तौर पर कुरान और सुन्नत के मुखालिफ होगा, किसी हदीस के, किसी दलील के, तो वो आपका combination of contract जो है वो जायज नहीं होगा. तो ये पहली clause कह रही है. The second clause says it should not be used as a trick for committing riba, such as agreement between the two parties to practice buyback or riba al-fadl. तो the सेकंड सिचुएशन आपको ये कह रही है कि आपका वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सूद की तरफ भी न लेके जा रहा हो, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय बैक जिस तरह की अरेंजमेंट है ये भी ना हो कि मैं आपको इतने में बेचता हूं इस शर्त पर कि आप वापस यही चीज मुझे सस्ती बेचेंगे. तो बुनियादी तौर पर ये बाय बैक है. और बाय बैक की सिचुएशन को अगर समझना हो कि बाय बैक क्या है, बैईना क्या है, उसके लिए भी मेरे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो बाय बैक या बैईना के नाम से मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं. तो रिबल फदल को भी वो कॉज ना कर रहा हो कि भी आप कहें कि भी मैं आपको जिस तरह के रिबल फदल के अंदर होमोजीनियस एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है उसके अंदर आप डिले कर देते हैं या आप एडिशनल क्वांटिटी दे देते हैं, तो इस तरह के दो टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आप इकट्ठे नहीं करेंगे कि वो रिबा को कॉज करें. तो ये सेकंड क्लॉज जो है वो आपको बता रही है. The third case is third clause 4 by 3. It says that it should not be used as an excuse for practicing a riba, कि combination of contract को आप इस वजह से ना यूज कर रहे हो कि उसके जरिए आप रिबा को खाना चाहें, तो इस तरह आप इन्वॉल्व ना करें combination of contracts को. So it should not be used as an excuse for practicing riba. The two parties could misuse, for instance, contracts combining when they conclude a lending contract that at the same time facilitates some other compensatory gains to them. For example, what is the meaning of this? So this is the example that they could stipulate in the contract that the borrower should offer accommodation in the contract, that the borrower should offer accommodation in house to the lender, or should grant him present
For example, if a guy who is going to sell his home, he says that I sold my house on the condition that I will accommodate for 1 month. I sold my house to you on the condition that you will give me gift. So this is that he is actually combining two contracts. One is sale and other is gift. So these two contracts cannot be combined together. Why? Because such combination is causing a riba. Causing रिबा, ये सूद को कॉज कर रहा है। तो इस वजह से शरह कहती है कि ऐसे कम्बिनेशन की आपको इजाजत नहीं होगी जो सूद को कॉज करे। और सूद क्या है? सूद यही है कि जब आपके ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट हो जाए तो आप अपनी उस लायबिलिटी से ज्यादा जो है वो हासिल करने की कोशिश करें शर्त तौर पर, तो उसे कहते हैं हम, ये रिबा है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स combining could also be misused by imposing excess repayment in term of quality or quality on the borrower, कि आप या तो उससे अच्छी क्वालिटी की डिमांड करें और या उससे ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करें, तो हम कहेंगे कि यह रिबा है और शरीयत के अंदर इसकी इजाजत नहीं होती। The fourth control or the principle of combining the contract is that combined contracts should not reveal disparity or contradiction with regard to their underlying rules and rulings and ultimate goals। तो वो कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप कंबाइन कर रहे हैं उनके अंदर आपस में कोई मुतजाद नहीं होना चाहिए, आपस में कोई contradiction नहीं होनी चाहिए। Such as here the 5 possible situations mentioned in the AAOIFI Shariah Standard, that granting an asset to somebody as a gift and selling it to him simultaneously. For example, if person says that I gift you my car for 1 month against against some rental, so it means that he is gifting same asset and later he says that I am giving you same asset on rent, so it is contradicting, because gifting mean you, when you are gifting your car to other guy, it means that you are giving that car in his ownership, but at the same time you says that you are selling him or leasing him. Why you are saying so? Because after gifting he has become owner, then why he give you price, why he give you rent? So it means that this sale and gift, this lease and gift, it means that you are combining two disparity to contradict contract। तो आप उसको कहते हैं जी मैं गाड़ी आपको तोहफे में देता हूं, बस हर महीने मुझे 2 महीने का किराया भी दे दिया करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको गिफ्ट भी दे रहे हैं और आप उससे किराया भी वसूल कर रहे हैं, तो ये दो मुतजाद चीजें हो गई। Combining mudarba with lending the mudarba capital to mudarib, it is also not allowed, because at the time of the, for example, if a person who got money and he says as a rabbul mal and he give money to mudarib saying that consider this capital as a loan, as because I'm lending it to you, but do the business and what will be the profit we will share, so it is not allowed. Why? Because the lending money mean there is a no mudarba. The borrower is owner of the capital. He is not no more mudarib. He will be owner of profit and loss. So, but on the other hand, in mudarba contract requires that Rabbul Mal will be responsible for the loss. So this is too contradicting. क्योंकि कर्ज कहता है कि जब आप मकरूज को पैसे देते हो तो मकरूज उस कर्जे के पैसे का मालिक बन गया, अब उसके ऊपर जितना भी नफा होगा वो उसी का होगा, उसके ऊपर जितना नुकसान होगा वो उसी का होगा। फिर लेंडर को पैसा देने वाले को मुनाफा किस चीज का चाहिए? तो उसका तो फिर क्योंकि कर्जे के अंदर होता है कि कर्जे की जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो गारंटीड होती है, उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता, जबकि मुदारबा के अंदर जो कैपिटल दिया जाता है उसके अंदर नुकसान होता है और वो नुकसान भी रब्बुल माल पैसे का मालिक बियर करता है। तो इस वजह से यहाँ पर मुदारबा को और लैंडिंग को, लोन एंड मुदारबा कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंबाइंड टुगेदर। करेंसी एक्सचेंज विद जुआला, like the person who at the time want to exchange currency, he says that if you exchange a currency with me, then I will gift it to you, then I will give you reward. So here they are combining a currency exchange with a reward contract, so it is not allowed. So it's mean that they are basically exploiting
तो ज्वाला में कोई रिवॉर्ड नहीं है, दूसरे के अंदर रिवॉर्ड है. सो दैट इज व्हाई करेंसी एक्सचेंज विद ज्वाला, this situation is not permissible. It is leading towards the riba. एक्चुअली करेंसी एक्सचेंज के अंदर जो भी एडिशनल बेनिफिट होगा रिबल फضल है, तो इस वजह से इसकी इजाजत नहीं होगी. सलम विद जुआला फॉर द सेम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. For example, if you sign solemn contract with me, then I will pay you this price. So consider this price as a reward. So basically, he is actually uh, pretending that he is giving him price as a reward. On the other hand, price is not reward. Price is against the subject matter he is going to sell. So that is why it is not allowed to combine salam with jwala contract. Number 5, leasing with selling, like hire purchase in its traditional form. In these cases, in this conventional paradigm, leasing with selling, कि आप किसी को कोई चीज रेंट आउट दें और शो ये करें कि हम, और कहें ये कि सारे के सारे नुकसान जो है आखिर में आप इस चीज को जरूर खरीदोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू लीज, then with the condition that you will sell it to him. So here again there is ishtarat aqd fi aqd, because you have combined two contracts, making one contract condition for the other. You say that I rent my car to you on the condition that after 2 years you will buy it. तो इसका मतलब है आपने दो कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठे कर दिया, तो आज इसको सूदी बैंककारी के अंदर हायर परचेज कहा जाता है. तो इस्लाम के अंदर इसकी भी गुंजाइश नहीं है. इट इज नॉट परमिसिबल. सो दीज आर द एक्चुअली 4 cases discussed in this Sharia standard. So Sharia controls 4 by 1, 4 by 2, 4 by 3, and 4 by 4. So this is the explanation of this portion.